सर नीट पीजी एंड INICET में क्या की डिफरेंसेस हैं? बोथ द पेपर्स आर 200 questions each. NEET PG difficulty is more than the INICET nowadays. What should be your top 9 subjects? Right, these 9 subjects will have around 140 questions from them. PSM and Obs Gynae will have around 25 questions each. So, and surgery also 25 questions each. So these are very important major subjects. In the remaining 10 subjects, you can get 30 correct out of the 60. You will get a very good rank in NEET PG. Hello students. So NEET एग्जाम में अराउंड 40 डेज बचे हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि सर नीट पीजी एंड INICET में क्या की डिफरेंसेस हैं, हम कैसे नीट पीजी के लिए स्पेसिफिकली पढ़ें या कैसे INICET के लिए स्पेसिफिकली पढ़ें. सो इस वीडियो में मैं बात करूंगा व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन नीट पीजी एंड INICET. सो स्टिक टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो. Now, starting में let's make few things very clear. What are the basic facts that we all know? So, both the papers are 200 questions each. Now, INICET में आपको टाइम मिलता है 3 hours. So, 180 minutes for 200 questions. Whereas NEET PG में for the same number of questions you get 3.5 hours. 200 questions, 210 minutes. Now, we all know after the block system has been introduced, the INICET exam happens in 4 blocks of 50 questions each. Each block you're given a time of 45 minutes, right? So there is a less time for more questions. But in NEET PG, you have ample of time. There are 5 total blocks of 40 questions each, and each block gives you around 42 minutes, right? So you have a little air to breathe while solving a NEET PG पेपर. एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग NEET PG में -1/4 है एज कम्पेयर टू INICET जिसमें -1/3 है. एंड दैट इज वाई NEET PG में यू हैव टू प्ले ऑन द फ्रंट फुट. आपको एग्रेसिवली खेलना है बिकॉज द चांसेस ऑफ यू स्कोरिंग हाई इन अ गेस इज हाई, बिकॉज -1/4 नेगेटिव मार्किंग है. सो अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं और एक क्वेश्चन सही होता है, then it's the same, right? So you have to play aggressively in a NEET PG exam. That is number one. Now what is the difficulty level? Now पहले बोलते थे कि INICET is a difficult paper because central institute बना रहा है, but what we have realized analyzing the past 4-5 papers is that the NEET PG difficulty is more than the INICET nowadays. Why? Because NEET PG is sort of more balanced paper, whereas INICET is very फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर डिपेंडेंट. फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर हैवी पेपर होता है. इस बार का भी जो INICET आया फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर प्रिडोमिनेंट पेपर था. सेकेंड थिंग PYQ हैवी, PYQ एंड PYTs हैवी होता है INICET, whereas NEET PG sort of more balanced paper. You will see that the PYQs are very less in NEET PG. अब PYTs तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है, कुछ भी हो सकता है PYT, बट अगेन exact PYQ very less chances in NEET PG as compared to INICET, right? Clinical vignettes have recently increased in NEET PG as compared to INICET. So I would say today's NEET PG is almost similar to 3-4 years back जो INICET का लेवल होता था. So NEET PG के लिए आपको अच्छे से पढ़ना है. And since the marking is -1/4, what should be your attempt level? At least above 190 in NEET PG. Okay, INICET के लिए I say 185 above is a good attempt. प्रेफरेबली 190, बट NEET PG में तो मिनिमम 190 अटेम्प्ट आपको करना ही करना है, राइट? नाउ व्हाट वी हैव सीन इज दैट माइनर सब्जेक्ट्स आर गेनिंग मोर वेटेज as far as NEET PG is concerned. For example, minor subjects in INICET like psychiatry, anesthesia, ortho, they don't get so many questions. ENT 4 questions, 5 questions, whereas in NEET PG you will see that 8 to 9 questions are coming from minor subjects, right? So as a student who is preparing for this NEET PG, which is on 3rd of August, what should be your top 9 subjects? Right? These 9 subjects will have around 140 questions from them. And what are these subjects? Path, Pharma, Micro, Biochem, Anat, Physio, Surgery, Obs Gynae, PSM. Right? So these 9 subjects will have around 140 questions. And if you make these subjects strong, and what do I mean by a strong subject? That in a strong subject you are getting less than or equal to 2 incorrect. तभी तो strong हुआ, right? तभी strong हुआ. So अगर आप इन 140 questions में से 120 questions correct कर लेते हो, so remaining 10 subjects में you just have to get 30 correct to touch that 150 correct mark, right? And this 150 correct mark will give you a top 5000 rank. Correct? So
very important is to focus on these 9 subjects, because these will fetch you around 140 questions. Okay, now PSM and obs gynae will have around 25 questions each. So, and surgery also 25 questions each. So these are very very important major subjects. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेडिसिन पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं, मेडिसिन पे टाइम लगाते रहते हैं. मेडिसिन बहुत बड़ा है, यू कांट डिफाइन अ सिलेबस ऑफ मेडिसिन, राइट. सो बहुत सारे क्वेश्चन मेडिसिन के विल बी कवर्ड इन PSM, पैथ, फार्मा. So I would say invest time in these 9 subjects, get 120 out of these 140 questions correct, and even if in the remaining 10 subjects you can get 30 correct out of the 60, you will get a very good rank in NEET PG, right? So this was regarding the video on NEET PG versus INICET. आप लोग प्लीज कमेंट्स में बताओ आपके क्या डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस, एंड विच एग्जाम आर यू मेनली फोकसिंग ऑन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ नाइस डे.